ओके ये वीडियो कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है, स्पेशली इफ यू आर एन एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर और इन जनरल जस्ट वांटिंग टू बिकम एन इंटरनेट पर्सनालिटी इन फ्यूचर, बिकॉज ओशिनो को कुछ ऐसे रीजंस की वजह से ही पॉपुलर हुई थी दैट आर अगेंस्ट ह्यूमन एथिक्स, एंड आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ यूट्यूबर दैट कैन यूज द वर्ड इन हिज वीडियो एंड गेट अवे विद इट. सो अगर तुम्हें उस न्यूज का पूरा कवर देखना है तो गो एंड वॉच एनी मैन्स वीडियो ऑन दैट. आई एम गोना कवर माई एक्सपीरियंस ऑफ ओशिनोको एंड व्हाई दैट गेव मी एंजाइटी. लेट्स डिस्कस द डिप्रेसिंग लाइफ ऑफ इंटरनेट पर्सनालिटीज. आइडल्स, जो इन जापानीज टर्म एक पर्सन होता है जिसकी पर्सनालिटी, लुक्स एंड इमेज आर सोल्ड टू पीपल, एंड इफ यू कंसिडर दैट ऑल ऑफ देम आर मिलियनेयर्स एंड हैप्पी, they are actually not, but you can still rely on protagonists coming in clutch, right? कुछ भी हो जाए, protagonist हमेशा 10 steps ahead ही रहेगा from the system is something that we can accept because it's prominent in animes. And protagonist इस series में इतना young होने के बाद इतना mature कैसे था is at the end of the video and is a major spoiler. So bear with me. But it becomes obvious when he saves a girl from ending her own life, which became an actual news in Japan. जब एक mother called out the entire studio by stating that पूरी story of the girl trying to end her own life is similar with the story of her daughter that passed away 3 years ago for similar reasons shown in this anime. This girl from the series goes through online bullying क्योंकि उसने so-called dating reality TV show में गलती से एक jealous and violent act commit कर दिया towards one of the other actresses. And the money-minded studio posted that clip of her in the new episode hurting the other actress, even though उस बंदी ने जिस actress को hurt किया था, she hugged her at the end and said it was okay, but it was too late. TRP के लिए they uploaded it partially and it led to so much bullying कि actor made that decision. And according to the lady in news, this similar thing happened to her daughter 3 years ago. A YouTuber girl from that show describe करती है कि how she have to fake her age in order to get acting gigs in these shows, क्योंकि 20 साल से ऊपर की लड़कियां are not allowed in these shows because according to the production houses they lose charisma and hence TRP. And when most idols or internet personalities or young girls fail to keep their persona alive and active on the internet, they have to become Minato girls, which is a real life term. And जब इनकी acting life बर्बाद हो जाती है, they have to find a kind of sugar daddy in the rich Minato ward of Japan, where they feed or live off of riches of other male, क्योंकि उनको उस lifestyle की आदत पड़ चुकी है. And हाँ, don't fall for the wholesome trap this anime lays in front of you with music and visuals, क्योंकि ये anime एक depressing story है of how everything is fake in the anime industry and how production houses only give a fuck about you as long as the numbers are reached, and कैसे तुम लोगों के emotions के साथ खेला जाता है with precise and unethical editing. A child actor prodigy is nothing more than a random girl struggling to get a gig क्योंकि उसकी child acting was relevant as long as she was a child. तुम समझ सकते हो कि not even your acting skills but your age can entirely demolish your acting career once and for all. And यही शायद reason है of why today most of the young lads are feeling burnt out and getting anxiety because they feel like their time is running out even in their 20s. This is why a lot of VTubers these days are scared to face reveal. Internet is that toxic. And यहाँ मेरे को डर लगने लगा कि what am I even doing with my life? Dream, the biggest Minecraft YouTuber, got slammed on the internet क्योंकि उसकी audience को उसका face पसंद नहीं आया. Seriously. Episode 1 of Oshinoko start होता है with a clear poster visualization of what Oshinoko can offer and will offer to the audience. A nice calm sneak peek into the life of an idol. A false one. Slowly as the episode continues, the idols show up to the hospital and is pregnant. जो तुम्हें लगेगा is a good news, is a good thing. But then the depressing part starts. She is not allowed to share that information क्योंकि बाहर the fans may have a possessive mindset towards her. तो जब उन्हें पता चलेगा कि her name is I in the series, is pregnant and have a lover, they will start unfollowing her, and that is when it got scary for me. This happened to Pokimane, a well-known streamer in real life, जहाँ Leafy, another YouTuber, revealed कि Pokimane had a boyfriend and fans ने इस information को सुन के unsub करना start कर दिया from Pokimane's Twitch. Why? क्योंकि उनको लगा कि Pokimane is cheating on them, and I was like, holy shit. But then it got even more depressing. Doxing is a term where you accidentally reveal your real address to people online and bad things start to happen. लोग पुलिस को बोल देते हैं कि तुम एक criminal या terrorist हो, and the official department starts to raid your house. This has happened multiple times on multiple streams in real life, live. But Oshinoko took this concept to the extremes. A fan who was obsessed with her shows up at her doorstep, and this is where the anime takes a 180
180 turn into the worst outcome possible. He stabs Ai in her stomach क्योंकि he felt cheated just like the fans of Pokemon did back in 2020, which makes me wonder क्या कुछ worse हो सकता था to Pokemon in 2020 if doxing attack happened on her too. पर मैंने बोला था ना कि it gets worse and worse. ये क्राइम तब होता है जब Ai twins को बर्थ दे चुकी थी and her son was standing behind her while she was bleeding to death. And यहाँ पे the anime factor kicks in. तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा sci-fi action मिक्स हो जाता है इस एनिमे में, बिकॉज ऑब्सेशन की वजह से इस स्टॉकर ने ये पहला मर्डर कमिट नहीं किया था. द सन ऑफ आई इन हिज पास्ट लाइफ वाज अ डॉक्टर हु वाज गोइंग टू डिलीवर हर ट्विंस एंड वाज आल्सो हर फैन एंड वाज किल्ड बाय दिस वेरी स्टॉकर क्लोज टू द हॉस्पिटल आई वाज इन. सो ही इज रीबॉर्न एज हर सन एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड. I'm telling the story in reverse. Now the signature star जो आई की आंखों में था fades away and the star in her son's eye become dark. क्योंकि यहाँ पे एक child ने अपना पूरा future decide कर लिया at this very moment. He has to find his father and kill him because he doxed his mother. Aquamarine is the kid's name जिसके पास अपनी past life की पूरी memories हैं intact and he is also good at acting. So he is basically a weapon stuck in a child's body. This series just blasts you with harsh reality checks and life lesson in each episode again and again. And इस series में एक scary फैक्टर भी है बिकॉज स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डिप्रेसिंग हो रहा होगा लाइक एक्सट्रीमली बैड और बैकग्राउंड में एक सूदिंग टोन बज रही होगी विच अकॉर्डिंग टू मी बेसिकली पोर्ट्रे दैट यू आर नॉट एन इंपॉर्टेंट ब्रेक इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ल्ड. यू आर नथिंग, यू डोंट मैटर एट ऑल, विच इज डिप्रेसिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड पीपल दैट आर एस्पायरिंग टू बिकम इंपॉर्टेंट इन लाइफ ऑनलाइन. बट इस एनिमे में एक आइडिया है जिससे यू कैन डिस्टिंग्विश कि करंट शॉट में प्रोटैगनिस्ट के एक्ट्स मलिशियस है या होलसम. द स्टार इन हिज आई, दैट स्टार टर्न डार्क द मोमेंट हिज मदर डाइड इन हिज हैंड्स. और अब जब जब प्रोटैगनिस्ट कुछ मलिशियस करने की सोचता है तब तब द स्टार इन हिज आई टर्न्स डार्क एंड एक्सपैंड्स आउट ऑफ दैट आई. सटल डिटेल बट एक्सट्रीमली कैप्टिवेटिंग. एंड यहाँ पे मेरे को एक और डिप्रेसिंग डिटेल पता चली. जिस दिन एक्वा's मॉम डाइड इन हिज हैंड्स हिज स्टार टर्न डार्क. तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस एंटायर सीरीज में इसकी गुड पर्सनैलिटी इज जस्ट an act played by him. Meanwhile, everything that he do every single day is to capture his father and kill him. And यहाँ पे एक और personal reality check आ जाता है मेरे लिए. It is so minutely detailed कि वहाँ एक ऐसा scene था that made me think that fuck, that is literally me. When the protagonist was editing a video entire night to save the career of the girl that I mentioned in the beginning, वो exhaust हो जाता है. Just like I get exhausted जब मैं अपनी editing end कर देता हूँ for a video. And even though मेरे को पता है कि मेरे सिस्टम को 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले वीडियो को एनकोड करने में, I still procrastinate और मैं सेम टाइम पे थंबनेल एडिट नहीं करता फोटोशॉप में सो दैट आई कैन गेट एटलीस्ट 30 सेकंड्स रेस्ट. एंड पता है वीडियो के एनकोड होने के बाद मैं क्या कहता हूँ जस्ट आउट ऑफ अग्रेशन कि बैंचो मेरे को फिर से काम करना पड़ेगा. फक, the specs on the system are good. And this guy said that same thing out of aggression in Japanese. Video ki starting was the future of this anime and the episode 1 of this anime is the future that we are gonna face or the hellhole that we are living in. The life of internet personalities can be way more fucked up than he or she shows on the camera. So before you start bullying an internet personality next time, do your research because your actions can lead to something worse that you can't even imagine. Good anime. Bye.